Hello everyone, I'm Raki and in this session I'm going to discuss with you the question number 7.5 and it's on page number 224 of chapter number 7 Equilibrium class 11th NCERT. Fine, so let's see what the question is all about and then we'll solve the solution for it. Fine, so the question is find out the value of Kc, that means equilibrium constant for each of the following equilibria from the value of Kp. तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है Kc की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. फाइन, सो हमें Kc की वैल्यू निकालनी है और हमें Kp की वैल्यू दी हुई है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है. The relation between Kp and Kc is Kp is equals to, that means equilibrium constant in terms of partial pressure is equals to Kc within bracket Rt raised to power delta n. So from this particular equation we will be solving out the value of Kc in terms of molar concentration. Fine, so let's begin. The relation between Kp and Kc is given as Kp is equals to Kc Rt raised to power delta n. ठीक है, Kp is what? Equilibrium constant in terms of partial pressure. Kc is equilibrium constant in terms of molar concentration. R is the gas constant, T is the temperature, and delta n is what? Delta n is equals to number of moles of gaseous product minus the number of moles of gaseous reactant. That means difference in the number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactant. Fine. So let's begin with the first part of the question, in which what actually they have given to us. Delta n कैसे निकलेगा? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं फर्स्ट इक्वेशन में? 2 + 1 3, 3 - 2. देखिए 2 + 1 3, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज 2. ठीक है, सो इट वुड बी 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1. सो डेल्टा एन की क्या वैल्यू है? 1. Kp की वैल्यू हमें क्या दी हुई है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? इट इज 1.8 इंटू 10 raised to power -2. टेम्परेचर की वैल्यू क्या दी गई है? 500 केल्विन. ठीक है, इट इज 500 केल्विन. ओके, सो और हाँ, हमारे पास जो आर गैस कांस्टेंट उसकी क्या वैल्यू है? 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज गिवन टू अस एंड नाउ विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Kc. सो Kp इस इक्वेशन में हम Kp की वैल्यू Rt और डेल्टा n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. Kp की वैल्यू क्या है? 1.8 इंटू 10 raised to power -2. Kc की वैल्यू हमें फाउंड आउट करनी है. R की क्या वैल्यू है? 0.0831 इंटू टेम्परेचर की क्या वैल्यू है? 500 एंड डेल्टा एन की क्या वैल्यू है? 1. ठीक है, सो Kc इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 raised to power -2 डिवाइडेड बाय 0.0831 इंटू 500. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर होगा 4.33 इंटू 10 raised to power -4 विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस ओनली. ठीक है, सो प्लीज कैलकुलेट आउट योरसेल्फ. आई हैव गिवन द अप्रोक्सीमेट आंसर टू यू. सो फॉर द फर्स्ट part of this question, the value of Kc is 4.33 into 10 raised to power -4. Fine. Now coming to the second part of the question.
So, for the second part of the question, delta N is equals to how much? Number of moles of gaseous product minus reactant. So, number of moles of gaseous product is 1 plus 1, 2 and 2. And number of moles of gaseous reactant is 1. So, 2 minus 1 is equals to 1. So, the value of delta N is equals to 2 minus 1, which is equals to 1 again. So, the value of Kp given to us in this question is 167. The value of temperature which is given is 1073 Kelvin. And the value of gas constant is equals to 0.0831 bar liter mole inverse Kelvin inverse. Fine. So, substitute these values in this equation. So, 167 which is Kp is equals to Kc, which we have to found out. Within bracket R 0.0831 into temperature क्या है 1073 raised to power 1. Fine. So Kc is equals to 167 divided by 0.0831 into 1073, and the answer is approximately 1.87. Fine. So this is the value of Kc for the second part of the question. Fine. So I hope now there won't be any doubt regarding the numerical which I have solved on the board. But still, if anybody is having any kind of doubt regarding this question, then please do let me know your doubts in the space given below. Well, this was it for me, and it's me, Rakhi, saying you all goodbye.